Namaste everyone. I want to discuss today इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन और इसका रिजल्ट और इसका कुछ प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी का अप्लाई करके जो CSIR वालों को प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो इसके बाद मेरा क्लास ख़त्म। तो क्लास शुरू होने के पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। मेरे आने वाले वीडियो के लिए तुम लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। ओके, नमस्ते एवरीवन। ओके, इंटीग्रल डोमेन क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, आज का क्लास में सिर्फ यही डिस्कस करूँगा। ओके, तो इंटीग्रल डोमेन जानने से पहले रिंग किसको कहती है ये जानना ज़रूरी है। रिंग किसको कहती है ये जानना मुझे ज़रूरी है। तो रिंग RBA नॉन एम्प्टी सेट एंड प्लस कॉमा डॉट B2 बाइनरी ऑपरेशन addition and multiplication where r comma plus this forms a commutative group and r comma dot forms a semigroup and A dot B plus C, A dot B, A dot C, B plus C, B dot A, C dot A for all A, B, C belongs to R. Okay, this is the then r comma plus comma dot this forms a ring. If a ring has a unit element with respect to unity element, not unity element, गलती हो गई, R has an identity element with respect to multiplication, then this identity element is called unity element in r comma dot. और भी एक प्रॉब्लम है, और भी एक बात बताना है। तो ये प्लस का रिस्पेक्ट से जो आइडेंटिटी एलिमेंट अटेंड करेगा R प्लस का अंदर, वो आइडेंटिटी एलिमेंट को जीरो एलिमेंट बुलाता है। दिस इज कॉल्ड जीरो एलिमेंट। सो नाउ we are going to the definition of integral domain. So इंटीग्रल डोमेन क्या है, क्या नहीं है, उस डेफिनेशन जानने से पहले और एक डेफिनेशन जानना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो डिवाइजर ऑफ जीरो एलिमेंट क्या है? डिवाइजर ऑफ जीरो एलिमेंट क्या है? डिवाइजर ऑफ जीरो एलिमेंट क्या है? A belongs to R and B belongs to R. Where R is a where R comma plus comma dot be a ring. B belongs to R and says that
A and B not equal to 0 element of R, दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R, and this is called divisor of zero element if A dot B is equal to 0. A dot B equal to 0. इसका एक एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर जनरल लीनियर ग्रुप of order 2 over R. Then we get then we take A equal to 1 0 0 0 or B 0 1 0 0. ओके, A डॉट बी, ए भी नॉन जीरो एलिमेंट और बी भी नॉन जीरो एलिमेंट, तो देन A डॉट बी इज इक्वल टू 0 0 0 0. ये था मेरा प्रॉपर्टी, ये था मेरा एग्जाम्पल ऑफ डिवाइजर ऑफ जीरो एलिमेंट. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन. डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन क्या है? डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन क्या है? जो आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब आर कॉमा डॉट दिस फॉर्म से कम्यूटेटिव ग्रुप, दिस फॉर्म से कम्यूटेटिव ग्रुप, आर फॉर्म से कम्यूटेटिव ग्रुप with unity, then this ring is called integral domain if R not contain zero divisor element. तो then this is called integral domain. This is called integral domain. और एक बात, और एक डेफिनेशन जान लेंगे. डिवीजन रिंग क्या है? डिवीजन रिंग का मतलब आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट बी ए रिंग एंड आर कॉमा डॉट दिस फॉर्म से कम्यूटेटिव दिस फॉर्म से ग्रुप, सिर्फ नॉट कम्यूटेटिव, सिर्फ ग्रुप, सिर्फ ग्रुप होगी तो आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज कॉल्ड डिवीजन रिंग. ओके, फील्ड क्या है? फील्ड क्या है? एफ बी ए रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट এত एफ कोमा डॉट फॉर्म से कम्यूटेटिव ग्रुप, then this is called field. ओके, इसका प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रल डोमेन का प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट रिजल्ट, प्रॉपर्टी और रिजल्ट, एवरी field
is an integral domain, but converse is not true. तो z प्लस डॉट to be an integral domain, but it not form a field because इसका all element except 0 except all element z डॉट का all this not forms a ग्रुप, इसलिए वो इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन फील्ड नहीं है, फील्ड का फॉर्म नहीं कर रिंग। और सेकेंड प्रॉपर्टी, एवरी फाइनाइट integral domain is a field. Every integral domain is a field. Okay. Next question. Next property. Number 3. Ring ZP is field if and only P is prime. If P is prime, then ZP is called the ZP forms a field, and ZP is field मतलब P जरूर प्राइम होगा, P जरूर प्राइम होगा। ओके, नेक्स्ट R इज एन इंटीग्रल डोमेन मतलब द पोलिनोमियल ऑफ ऑल डिग्री n whose every coefficient belongs to this integral domain, then this is फिर भी इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगा। ओके, और नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, ZPI is an integral domain if 4 is divided P minus 3, then ZP this is not Z5I is not integral domain because क्या 4 does not divide 2, इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। और Z7I इज इंटीग्रल डोमेन, क्यों 4 divide 7 minus 3 always. So Z7I always integral domain if 4 divides P minus 3, where ZPI is
गाउसियन रिंग, गाउसियन रिंग। तो गाउसियन रिंग का मतलब क्या? ए प्लस आई बी फॉर्म्स दिस दिस this contain a plus ib forms element, this element which forms a plus ib where a comma b belongs to zp. ओके, ओके। तो इस प्रॉपर्टी के यूज करके, इस प्रॉपर्टी यूज करके जो मैं एक क्वेश्चन बनाया, तो उस क्वेश्चन का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? Which of the following are integral domain? A plus ib, a plus b root 5 says that a comma b belongs to q, and option 2 f says that a comma b to r set of all continuous map. This forms integral domain. And option 3 the ring of complex function on unit disk. And option 4 the polynomial ring zx. ओके, तो इनका आंसर क्या है तुम लोग ज़रूर मुझे मेरा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, और अदरवाइज यू सेंड अ मेल और फिर भी मैं लिखती हूँ biplaya@gmail.com। तुम लोग ज़रूर कमेंट भेजना मेरा कमेंट बॉक्स और दिस ईमेल पर। ओके, और एक बार मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, गुड बाय।